तो आज हम देखेंगे 20% सीरीज में हमारा रिमेनिंग का लेक्चर नंबर 11 और जिसमें हम चालू कर रहे हैं, हमारा चालू कर दिया है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम देखेंगे कोलरिश लॉ क्या है, उसके साथ साथ हम देखेंगे उसकी एप्लीकेशन क्या है, हाउ वी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड टुडे वी विल सी what is the electrolysis and what is the electrolysis, how the electrolysis of molten NaCl and aqueous NaCl occurs। इतने सारे टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा है कोलरिश लॉ। क्या कहता है कोलरिश लॉ? कोलरिश लॉ कल हमने देखा था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन कैसा रहता है? इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है? जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आई जस्ट टेक हियर द एग्जांपल दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, molar conductivity of acetic acid is the sum of molar conductivity of its constituent ions। हमने देखा है concentration is equals to 1 upon dilution। when the dilution is infinity तो concentration is 0 because 1 upon infinity is equals to 0। तो at infinite dilution means at 0 concentration। so when the dilution is infinity, that is lambda infinity of CH3C double bond O negative plus lambda infinity of H positive, this gives you the molar conductivity at infinite dilution, and so it can be written as lambda of which acid? Acetic acid at infinite dilution means at 0 concentration is the sum of molar conductivity of acetate ion at 0 concentration plus molar conductivity of H positive ion at 0 concentration. That 0 concentration is nothing but infinite dilution. So this is about the which conductivity? Molar conductivity। After discussing this molar conductivity, अब हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो this is about the molar conductivity of acetic acid at 0 dilution, or we can say at infinite zero concentration or infinite dilution। और ऐसा जरूरी नहीं कि एक एक है तो एक एक ही रहेगा। इसमें अगर मैं CA3PO4/2 का अगर ले लूं एग्जांपल, फॉर CA3PO4/2 द मोलर कंडक्टिविटी, जब हम पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं तो वी रिप्रेजेंट इट बाय लैम्डा, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वी रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल लैम्डा। तो यहाँ पे कितने CA है? 3 CA डाई पॉजिटिव। This is the molar conductivity of Ca dipositive at which concentration? 0 concentration। 2 into molar conductivity of PO4 trinegative at which concentration? 0 concentration। So in this way we can get the molar conductivity of calcium phosphate। In this way we can have the molar conductivity of calcium phosphate 3 into lambda 0 of Ca dipositive plus 2 into lambda 0 of PO4 trinegative। In this way we can calculate its which conductivity? Molar conductivity। After this is the molar conductivity। क्या कहता है कोलरिश लॉ? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, is equal to the sum of molar conductivity of its constituent ion at infinite dilution, ठीक है, and in which each ion migrates independently of its co-ion and make its own contribution to the total molar conductivity। ऐसा उसका स्टेटमेंट है। मेन इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला कैसा लिखना है। अब इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आपको आता है, क्या कहता है क्वेश्चन? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है लाइक NaCl, KCl, that is a salt। Generally salt are which electrolyte? Strong electrolyte। जैसे कौन हो गया? NaCl, KCl। HCl is a strong acid, H2SO4 is a strong acid, NaOH is a strong base। These are generally what? Salt। These are the acids and this is the base। This is acid and these are the salt। ये जनरली कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
Now, as we have, this is the salt and these are the which electrolyte? Strong electrolyte. This is at which dilution? Infinite dilution. Now, as we have, this is at infinite dilution. So, listen how to find out the value of molar conductivity at infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालनी है, जैसे हमें किसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, एसिटिक एसिड, तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेना. कैसे तोड़ेंगे? लैम्डा जीरो ऑफ CH3COO निगेटिव प्लस लैम्डा जीरो ऑफ H पॉजिटिव. ठीक है. अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्शन कर देना. जैसे इसको मैंने ये नहीं रखा तो ये क्या हो गया, सोडियम एसिटेट विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसको Cl लगा तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl. ज्यादा का क्या लगाया हमने, NaCl, तो उसको क्या कर देना, माइनस माइनस लैम्डा जीरो ऑफ NaCl. समझ गए? तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी भी हम निकाल सकते हैं इजीली. दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी भी निकाल सकते हैं. दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी भी निकाल सकते हैं. एंड सो बाय यूजिंग कोलरिश लॉ वी कैन find out the molar conductivity of weak electrolyte using strong electrolyte. Same, अगर हमें लैम्डा जीरो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक बेस दैट इज NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. अब NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इसमें क्या है, NH4 पॉजिटिव OH निगेटिव. क्या करना है, लैम्डा जीरो ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा जीरो ऑफ OH निगेटिव, लैम्डा जीरो ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा जीरो ऑफ OH नेगेटिव. फिर इसमें क्या करना है, NH4 पॉजिटिव है तो इधर लगा देते हैं Cl नेगेटिव, और H पॉजिटिव है तो इधर लगा देते हैं Na पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा NaOH. NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, NH4Cl इज अ सॉल्ट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ज्यादा क्या हो गया, Cl और Na, माइनस क्या कर देंगे, लैम्डा जीरो ऑफ Na, सॉरी व्हाट, NaCl. हो गया. एंड यू गेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH. तो इन दिस वे, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. हमें पता है अल्फा. व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. दैट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. Alpha is the degree of dissociation. And as we have, this is the alpha is the degree of dissociation. And we have the formula, number of moles dissociated. Number of moles dissociated. Number of moles dissociated upon total number of moles taken. Number of moles dissociated upon total number of moles taken, that gives you the alpha, that is the degree of dissociation. So degree of dissociation is alpha, it is given by number of moles dissociated upon total number of moles taken. अब बताइए मुझे that alpha is the what? Degree of dissociation. अब number of moles dissociated upon total number of moles taken, this is the alpha. हमें पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सारे मोल्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे लैम्डा जीरो, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द कंप्लीट डिसोसिएशन. कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब जितने लिए थे पूरे टूट गए, दैट इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. एंड इसको लिखेंगे लैम्डा सी, मतलब जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होगा उस कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी रहेंगी, दैट इज लैम्डा सी. एंड सो वी गेट हियर द फॉर्मूला, alpha is equals to lambda c, that is the molar conductivity at given concentration. Molar conductivity, molar conductivity at given concentration, molar conductivity at given concentration upon molar conductivity, molar conductivity at zero concentration, molar conductivity at zero concentration, और उसी को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन.
And so we can have, this is the formula of alpha. Alpha is equals to, what is alpha? Alpha is equals to lambda c upon lambda 0. This is the molar conductivity at given concentration upon molar conductivity at 0 concentration or infinite dilution. In this way we can have, this is the value of alpha. And as we have, this is the value of alpha. अभी क्या करेंगे, अल्फा की मदद से हमारे पास है कोई एसिड अगर है, उस एसिड के लिए जब ये एसिड डिसोसिएट होके क्या बनाता है, H पॉजिटिव A नेगेटिव। जब एसिड डिसोसिएट होता है एट टाइम t इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन C है इसका कॉन्सेंट्रेशन ये, जब उसमें के कितने मोल टूटे, x, ये कितने थे, C, तो अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन C, तो x इज इक्वल टू C अल्फा। तो C थे, टूटे कितने, x, इसके भी x, इसके भी x, तो x इज इक्वल टू C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। And so we can have the formula of K. K is equal to C alpha into C alpha upon C minus C alpha. So what we have, C alpha into C alpha upon C commonly have 1 minus alpha. That C get cancel and you get the formula C alpha square upon 1 minus alpha. This is the formula of K. This is the which constant? Dissociation constant. And 1 minus alpha is nearly equal to 1. As the 1 minus alpha is nearly equal to 1 for which electrolyte? Weak electrolyte. Weak electrolyte के लिए 1 minus alpha is nearly equal to 1, and so we can have the formula Ka is equal to C alpha square. तो alpha square is equals to Ka upon C. तो alpha is equals to under root of Ka upon C. ठीक है, और we can say Ka is equal to C alpha square. And how to find out the value of alpha? Alpha is equals to lambda C upon lambda 0. In this way, by using the molar conductivity at given concentration and molar conductivity at 0 concentration, we can find out the value of alpha. And by using this value of alpha and by knowing the concentration, we can find out the dissociation constant of acid. So this is also one of the application of which law? Coleridge law. So we have the two applications of Coleridge law. By using this Coleridge law, we can find out the molar conductivity of which electrolyte? Weak electrolyte. Using strong electrolyte, we can calculate the dissociation constant. And we can also find out the value of alpha. Percent alpha is equals to alpha into 100. This is about the your topic, that is which conductivity? Molar conductivity. After having this molar conductivity and Coleridge law and all, we are discussing the next topic, that is the types of unit cell, types of cell we can say. Have you written this? हो गया? चलो आगे बस। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू हो रहा है सेल। Generally, cell are of two types. That is called electrochemical cell. Electrochemical cell. Electrochemical cells are of two types. One is the electrolytic cell and another is a galvanic cell. This galvanic cell is also called voltaic cell. Voltaic cell. Galvanic cell and electrolytic cell. So we have the two types of cell. One is the electrolytic cell, another is a galvanic cell, or it is also called voltaic cell. What is electrolytic cell? It converts electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन कौन सी एनर्जी में करता है? केमिकल एनर्जी में करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करने वाले का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और गैल्वानिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन, केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
जो केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है उसका नाम है कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल, और इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेइक सेल। ये जो सेल है इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इसका क्या किया जाता है? यूज। सो एज दे आर यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, तो हम पहले यहाँ पे आप जगह छोड़ सकते हो, बाद में हमने दोनों सेल देखने के बाद हम इनके डिफरेंसेस देखेंगे। अभी हम पहले क्या देख लेते हैं, एक एक सेल को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। Listen, how is the electrolysis of molten NaCl? मोल्टन NaCl क्या है? हमारे पास एक कंटेनर है एंड दिस कंटेनर हैज टू रॉड. This is one rod, this is another rod. And to this container we have taken a what? Molten NaCl. इसमें हमने लिया है मोल्टन NaCl और इसको कनेक्ट किया गया. वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. One is connected to the positive terminal, another is connected to the negative terminal, and this is the molten NaCl. This is the molten NaCl we have. One is connected to the positive terminal, another is connected to the negative terminal, and we have this is the which NaCl? Molten NaCl. And ये बैटरी है यहाँ पे लगी हुई बैटरी, ठीक है. बैटरी और सेल हम कह सकते जो भी है, जहां से बाहर से हम डायरेक्ट करंट सोर्स लेंगे. सो ये इलेक्ट्रिसिटी यहां से मिल रही है. जब ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट है, जो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट है उसको कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट है उसको कहेंगे कैथोड. So we have the two electrode, one is connected to the positive terminal called as anode, another is connected to the negative terminal called as cathode, and they are immersed into the which solution? Molten NaCl solution. अब जब इसमें से करंट हम इसमें डालेंगे तो ये मोल्टन NaCl डिसोसिएट होगा और बनाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो solution will have the two types of ion, that is Na positive ion and Cl negative ion. And we have the concept there is a force of attraction between positive and negative. As there is a force of attraction between positive and negative, तो ये नेगेटिव है तो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ. ये पॉजिटिव है तो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ. There is the force of attraction between positive and negative. Positive negative attraction. As there is the force of attraction between positive and negative ions, this Cl negative will get attracted towards the what? Positive, and this Na positive will get attracted towards the negative. अब क्या होगा? ये एनोड है, ये कैथोड है. दिस इज द मोल्टन NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है. एक है एनोड, एक है कैथोड. दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. अब क्या होगा एनोड पे? ठीक है, एनोड पे कौन सा आयन गया है? Cl नेगेटिव. यहां तक इसको बोलना कंस्ट्रक्शन, और पूरा अंग्रेजी में लिख लेना. कंसिडर वन ऑफ द कंटेनर फिल्ड विथ मोल्टन NaCl. टू कार्बन रॉड और ग्रेफाइट रॉड, दीज आर द ग्रेफाइट रॉड, ठीक है. टू ग्रेफाइट रॉड आर immersed into this molten NaCl. One is connected to the positive terminal called as anode, another is connected to the negative terminal called as cathode, ठीक है. Then when the electricity is passed through the molten NaCl, it undergo dissociation and it forms the Na positive ion and Cl negative ion, and there is a force of attraction between positive and negative. That Cl negative ions will get attracted towards the positive and Na positive will get attracted towards the negative.
तो Cl negative will get attracted towards the positive, that is anode. Anode पे क्या होगा? Negative charge means how many extra electron? One extra electron. उसने वो इलेक्ट्रॉन दिया, it will form Cl free radical with the removal of how many electron? One electron. As there is a one electron, so they share their one unpaired electron इधर. So ये बनाएगा twice Cl free radical with the removal of how many electron? Two electron. अब ये दो Cl फ्री रेडिकल अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करके कौन सी गैस बनाएंगे? Cl2 गैस. If you add these two reaction, two Cl free radical get cancel, and what we get? Twice Cl negative gives Cl2 gas with the removal of how many electron? Two electron. This is the electrolysis of molten NaCl. Anode है, twice Cl negative form twice Cl free radical plus 2 electron. 2 Cl free radical, it forms Cl2 gas, and in this way with this reaction. So as it is the oxidation reaction, so we say it is the oxidation half cell reaction at anode. This is the oxidation half cell reaction at anode. In the same way, what happened at cathode? If you see, twice Na positive accept two electron and get converted into twice Na solid. दो Na पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पे गए थे, दो इलेक्ट्रॉन इधर से आए, उसने वो एक्सेप्ट किए, और हम इसको कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड. This is the reduction half cell reaction at cathode. And as it is the reduction half cell reaction at cathode, twice Na positive accept two electron, it forms twice Na solid. This is the reduction half cell reaction at cathode, that is the oxidation half cell reaction at anode. ये कैथोड की कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन. अब हम लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन. When we write the net cell reaction, इसको हम वर्किंग कहते हैं, ठीक है, इसको हम वर्किंग कहेंगे. सो अभी हम जब नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो हाउ विल बी द नेट सेल रिएक्शन? फर्स्ट वी राइट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, and second one we write reduction half cell reaction at cathode. So one is the oxidation half cell reaction, another is the reduction half cell reaction. Oxidation half cell reaction is twice Cl negative, it forms the Cl2 gas with the release of how many electron? Two electron. And this twice Cl negative gives Cl2 gas with the release of two electron. And second, reduction half cell reaction, that is what? Twice Na positive accept two electron and it forms twice Na solid. After adding these two reaction, two electron get cancel. What we get? Twice Na positive solid plus twice Cl negative. It gives twice Na solid plus Cl2 gas. So this is the silvery white sodium deposit at cathode, and pale greenish येलो है क्या? पेल ग्रीनस बरोबर है. पेल ग्रीन क्लोरीन गैस liberate at anode. So in this way we have these two reactions. This is the silvery white sodium metal deposited at cathode and pale greenish chlorine gas liberated at cathode. This is the result of electrolysis. This is the result of electrolysis. This is the result of electrolysis, and this is about your topic, that is the electrolysis of molten NaCl, or it is also called fused NaCl.
After having the electrolysis of molten NaCl or fused NaCl, we see here the electrolysis of aqueous NaCl. हो गया ये? Now we are discussing the next topic, that is the electrolysis of aqueous NaCl. Now, how there is the electrolysis of aqueous NaCl? You know very well about the which NaCl? Aqueous NaCl. Aqueous NaCl means there is NaCl plus aqua, that is water. Again we have construction, again we have taken one container filled with aqueous NaCl. Huh. This is aqueous NaCl. Again, one is connected to the positive terminal, another is connected to the negative terminal. One which is connected to the positive terminal is carry positive charge and so can act as a anode. And those which is connected to the negative terminal will carry negative charge and can act as a cathode. Aqueous NaCl means there are the two electrolytes, one is a water and another is NaCl. When electricity is passed through this container, water will dissociate to form H positive and OH negative, and NaCl will dissociate to form Na positive and Cl negative. Now there is a competition now, because this is the positive electrode, so two ions move there. One is a Cl negative and another is OH negative. And here two ions moves there. One is the Na positive and another is H positive. But here they carry negative charge, so they become stable by donation of electron. Because everyone wants to become a stable अपने सिर पे लगे हुए चार्ज को वो हटाना चाहेगा, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसलिए वो कौन सा चार्ज हटाना चाहेगा? निगेटिव चार्ज। और अगर इसको निगेटिव चार्ज हटाना है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और यहाँ पे दोनों में कंपटीशन कौन जीतेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है? क्लोरीन। क्योंकि लेने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन। कितनी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? 3.5, इसकी 3। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो देने की टेंडेंसी कम। इसकी लेने की कम तो देने की ज्यादा। तो किसकी देने की ज्यादा है? क्लोरीन। एंड सो एट एनोड, अब हम वर्किंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग शुरू करेंगे। एट एनोड कौन कौन गए? Cl negative and OH negative ions approach, है ना। उधर कौन पहुंचे? किसने अप्रोच किया? Cl negative and OH negative. But Cl negative undergoes oxidation and OH negative come back to solution, and OH negative come back to the solution, ठीक है। Cl negative undergo oxidation and OH negative come back to the solution, ये solution को वापस आएगा और इसका होगा ऑक्सीडेशन। Cl negative undergo oxidation and OH negative come back to the solution. So this is about the oxidation and reduction. At anode, this is the electrolysis of aqueous NaCl, और इसीलिए एट एनोड क्या होगा? एट एनोड पे अब होंगी कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, जो हमने अभी देखी थी। Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन कैसे होता है? Twice Cl negative is get converted into Cl2 gas with the removal of 2 electron. Just before we have seen its mechanism, ठीक है।
अब कैथोड पे क्या हुआ ये देखो, हमने मैकेनिज्म देखी है, हाउ दिस गेट कन्वर्टेड। सो नाउ व्हाट हैपेंड, ये तो हो गया एनोड पे। एट कैथोड कौन कौन पहुंचे? एट कैथोड H positive and Na positive approach। H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव अप्रोच करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? H पॉजिटिव, क्योंकि वो हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1 एंड सोडियम इज 0.9। तो इधर रिडक्शन करना होता है, उधर लेना होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ले कौन अच्छे से सकेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। किसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा है? हाइड्रोजन। So it will undergo reduction, and as it will undergo reduction, so what happened at cathode? Cathode पे क्या होगा? Twice H positive accept 2 electron and get converted into twice H free radical. These twice H free radicals share their one unpaired electron and it forms the which gas? H2 gas. These twice H free radical get cancelled. So if you write the overall reaction, twice H positive accept 2 electron and it forms the which gas? H2 gas. These twice H positive accept 2 electron and it forms the which gas? H2 gas. So in this way we have the two types of reaction. One is the oxidation half cell reaction, another is the reduction half cell reaction. आगे चलेंगे बच्चों। So two types of the reactions we have. One is the oxidation half cell reaction and another is a reduction half cell reaction. Getting? So one is at anode and another is at cathode. हो गया? एक है एनोड के ऊपर, एक है कैथोड के ऊपर। आगे चलेंगे बच्चों। At anode and at cathode, Cl negative, OH negative ions approach, ठीक है, but Cl negative undergo oxidation, OH negative come back to solution at cathode। चलायचं समोर आता। अब क्या होगा? सॉल्यूशन में बैक कौन आया? यहां से Na पॉजिटिव। As Na positive and OH negative come back to solution, therefore they form NaOH and solution become alkaline, and hence it can change color of phenolphthalein to pink। फेनॉल्फेथालीन वो सॉल्यूशन कौन सा हो जाता है? पिंक। ठीक है, इन बेसिक मीडियम। अब लिखेंगे रिजल्ट और ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड and reduction half cell reaction at cathode. First is the oxidation half cell reaction at anode. What is oxidation half cell reaction at anode? Oxidation half cell reaction at anode. Oxidation half cell reaction क्या है? Oxidation half cell reaction, twice Cl negative gives Cl2 gas plus 2 electron। रिडक्शन half cell reaction क्या है? Twice H positive plus 2 electron from which gas? H2 gas। 2 electron get cancelled, twice Cl negative plus twice H positive from Cl2 gas plus H2 gas। This is the net cell reaction। This is the net cell reaction, and this is the electrolysis of which NaCl?
This is the electrolysis of aqueous NaCl. Here this is a pale green color chlorine gas and colorless H2 gas at cathode, and this is at anode. After discussing this last topic, today's last topic we discuss, that is the Daniel cell. So first, do you understand about this? ठीक है, 5 to 10 minutes का टॉपिक है डैनियल सेल. तो लिसन व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस डैनियल सेल. तो अभी अभी हमने देखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl. एक्चुअली उसमें टॉपिक नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए डैनियल सेल समझना बहुत अनिवार्य है. सो डैनियल सेल, which is the type of voltaic cell, voltaic, or we can say galvanic cell. So it has the two container. This is the one container we have, and same again we have again the one more container. So these are the two containers we have. This container is filled with zinc rod immersed into the solution of ZnSO4 solution. This is zinc rod immersed into the solution of ZnSO4 solution having concentration 1 molar, and it has the copper rod immersed into the solution of CuSO4. This is the copper rod immersed into the solution of CuSO4. This is copper rod. And these two are connected with each other by inverted U-shaped glass tube called as salt bridge. This is inverted U-shaped glass tube containing agar-agar jelly. ठीक है? This is the zinc rod. ठीक है? One is connected to the positive terminal, another is connected to the no. Here opposite thing. ये ऐसा यहाँ पे खाली वोल्ट मीटर एमीटर से कनेक्टेड है. दिस कैरी नेगेटिव, दिस कैरी पॉजिटिव. यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं हम सॉल्ट ब्रिज. इसमें होता है सैचुरेटेड KCl और यहाँ पे होता है ग्लास वुल. ये है सॉल्ट ब्रिज. यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिंक की कॉपर से ज्यादा है, और इसीलिए जिंक पे होता है ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, दैट इज विच रॉड? जिंक रॉड. तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है एंड इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू Zn डाइपॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और ये Cu डाइपॉजिटिव आयंस, बिकॉज इट इज द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 हैविंग कंसंट्रेशन 1 मोलर. तो उस सॉल्यूशन में रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड. ठीक है, दैट इज कॉपर रॉड. इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज एनोड पे ऊपर, और कैथोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज.
सॉल्यूशन के अंदर के जो Cu डाई पॉजिटिव है वो उधर से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं, Cu सॉलिड। सॉल्यूशन के अंदर के Cu डाई पॉजिटिव, वहां से जो जिंक रॉड था उसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से तैरते तैरते इधर आए और Zn डाई पॉजिटिव कहाँ चला गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर के Cu डाई पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, and by accepting the two electron, that Cu die positive is converted into Cu. So this is the oxidation half cell reaction at anode, and this is the reduction half cell reaction at cathode. तो एक है बच्चों ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और दूसरी है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। This Cu die positive accept two electron and get converted into Cu. This Cu die positive accept two electron and get converted into Cu, and that zinc is get converted into Zn die positive plus two electron. So ये है बच्चों ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट नेट सेल रिएक्शन। We will have here the net cell reaction. So what is net cell reaction? दोनों को ऐड करेंगे, जिंक Zn डाई पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, Cu डाई पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन gives Cu. After adding these two electron get cancelled. Zinc solid plus Cu die positive having 1 molar concentration is get converted into Zn die positive plus Cu solid. इसका भी concentration है 1 molar। ये है इसकी कौन सी रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। Zinc is converted into Zn die positive with the removal of two electron, and Cu die positive accept two electron and get converted into Cu. इस तरह से इसकी रिएक्शन हो गई। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए एनोड इज रिटन एज एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, जैसे वहां पे भी वो ऑलरेडी कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। So it is in direct contact with ZnSO4 solution. So direct contact is represented by single vertical line, that is ZnSO4 solution having the concentration 1 molar. That ZnSO4 is in direct contact with CuSO4 having the concentration 1 molar, and that CuSO4 is in a contact with Cu. So in this way we have, this is zinc solid ZnSO4, CuSO4 1 molar concentration and Cu solid. Here zinc is giving electron, and so the direction of current is that this anode carry negative, cathode carry positive. This is the direction of flow of electron and this is the direction of flow of current. This is the which representation, cell representation. So this is about the two types of the cell we have seen. One is the electrolytic cell and another is a galvanic cell. If you see, the 5 differences are there in between electrolytic cell and galvanic cell. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल, इधर केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे किसका यूज हुआ, सॉल्ट ब्रिज यूज हुआ, सॉल्ट ब्रिज नॉट यूज्ड। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, 1 इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट्स। फोर्थ, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इधर एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एंड एक्वियस NaCl, और यहाँ पे कौन सा सेल, डैनियल सेल।
कल हम अलग अलग सेल देखेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे बाकी की बातें। डैनियल सेल। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव कंप्लीटेड अबाउट अवर यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बाकी का हम कल के लेक्चर में देखेंगे।